हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और एज यू नो आई एम फॉलोइंग 30 days makeup challenge and it is day 12 for my 30 days makeup challenge. And today I will teach you how to contour your face. Like listen, I'm not makeup artist. Yes, I'm artist, but I'm not makeup artist, so I don't want to. I have no right to teach you anything, but it is the task called contour tutorial. So as it is tutorial, so I have to do it, and I will show you how I do my contour, and you can do accordingly, like face के शेप से, स्ट्रक्चर से आप उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्टोर कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रही कि मैं जो कॉन्टोर करूँगी वही आप करेंगे, क्योंकि आप हर फेस की जो शेप होती है, बनावट होती है, वो अलग होती है और अकॉर्डिंगली हम कॉन्टोर करते हैं। लाइक इफ़ यू हैव small forehead, you don't need to contour there. Like, well, first of all, let me tell you what is contour. Basically contour से हम चीज़ों को illusionally कम या ज़्यादा करके दिखा सकते हैं। Like अगर आपके forehead बड़े हैं तो you can illusionally make it small, right? You can sculpt and you can add dimensions. So that is the game of contour. Like if you don't know, मैं आपको बता दूं कि contour अपने में ही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा game changer होता है contour. You can also contour your face accordingly. There are so many charts in which you can see your face structure, like face shape, and accordingly you just apply your contour. So I know what suits me, so I will do what I can do with my face, but you can do accordingly. कुछ नहीं करना है, you will get the chart and just follow the procedure whatever it will be, or you can definitely can do it. Like if you have long face, you need to contour like here and in your chin area, and like if you have broad face, you will contour like here. Basically हमें चीज़ों को जो है वो ऐसे दिखाना नहीं है. Yes, it is, we can say the kadwa such. Yes, if you have round face, just you need to say I have like बहुत चौड़ा forehead, so I need to contour here just to make it like a little bit sculpture या फिर dimension देने के लिए. और if you have fuller cheeks, you can contour here so that it will look, मैंने किया है थोड़ा सा contour, so it is looking like chiseled. So this is the game of contour. So let's start with our today's video. So बिना किसी देरी के पूरी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो. So let's get started. So as you can see, मैंने अपने फेस का मेकअप किया हुआ है, मुझे बस कॉन्टोर करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज कॉन्टोर. लाइक कहाँ हमें कॉन्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है और क्यों. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, ओके, सो आई विल, एज यू कैन सी माई फेस, इट्स राउंड एंड दीज आर द पार्ट्स जहाँ मुझे कॉन्टोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है, मेरा फोरहेड थोड़ा ब्रॉड है और इसको इल्यूजनली छोटा दिखाने के लिए आई विल यूज़ कॉन्टोर. ओके, और एज यू कैन सी मेरी माई चीक्स आर नॉट दैट फ्लफी और फुलर, सो यू कैन सी इट्स ऑलरेडी नेचुरली ये कॉन्टोर्ड है. सो मैं यहाँ कॉन्टोर नहीं करती हूँ, बट आई यूज़ ब्रॉन्जर. अगर मैं बात करें व्हाट इज़ कॉन्टोर एंड व्हाट इज़ ब्रॉन्जर, तो ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं. व्हेन यू यूज़ कॉन्टोर, वो आपके फेस को एक डायमेंशन देता है,
देता है। और ब्रॉन्जर की बात करें तो वो आपके चेहरे पे एक वार्मनेस देता है। सो इफ आई नीड आई यूज कॉन्टोर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट यूज ब्रॉन्जर ओनली। सो आज हम कॉन्टोर यूज करेंगे। और यस, आपके डबल चिन को भी कम करने, डबल चिन को भी छुपाने के लिए कॉन्टोर यूज होते हैं। So today I will teach you how I contour my face and how you can contour your face. So for that you need a contour kit, or you can use concealer which will be darker than your skin tone, and I am using LA Girl Pro Concealer. It is in the shade Beautiful Bronze. So हमें मेरे पास कोई ब्रॉन्जर किट है नहीं, सो आई जस्ट यूज, और मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती, तो दिस इज़ ओके फॉर दैट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई काइंड ऑफ फेस और राउंड फेस, मुझे कॉन्टूर करने की ज़रूरत यहाँ फोरहेड के पास। आई डोंट कॉन्टूर माई चीक्स, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज किया तो वो थोड़ा सा अंदर हो गया, बट मुझे करने की ज़रूरत नहीं है अब। और आई विल यूज़ फॉर माई डबल चिन, टू हाइड माई डबल चिन। और नोज कॉन्टूर भी करेंगे, बहुत पॉपुलर है, कोई बहुत पॉपुलर और बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, लाइक। सो आई नो फॉर माई फेस क्या सही लगेगा। सो let's start with the procedure, yes. So I will बहुत थोड़ा सा यूज़ करेंगे, क्योंकि you know less is more। थोड़ा सा चीक्स के पास भी कर लेते हैं, and then for nose, okay, ये आप जितने पास करेंगे आपकी नोज़ उतनी ज़्यादा पॉइंटेड बनेगी। मुझे पॉइंटेड नहीं चाहिए, सो आई विल जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस। ओके, नाउ टू हाइड माई डबल चिन, ओके। और ये मुझे मेरे चिन में भी डफ देनी अच्छी लगती है, लाइक तो है पहले से, बट आई जस्ट लाइक, इफ यू वांट टू you can make dimples also. Okay, now I'm just going to blend it. Yeah, like this. I'm not doing anything with this part क्योंकि I don't need it. You can do if you need it, right? So yes, मैंने बहुत थोड़ा सा कॉन्टूर यूज किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और you can skip this part, okay? But this is my favorite part. I will. Can you see the difference? It will make different, like it will work like a pro. Okay, so I am done with my contour. Contour कर लिया तो highlighter करना ज़रूरी है, otherwise आपको वो डायमेंशंस नहीं मिलेंगे आपके फेस पे। ओके, now I'm just blending it well. Blending is the key. आप अपने
प्रोडक्ट्स को जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे वो उतने ही ज़्यादा नेचुरल दिखेंगे. सो आई एम जस्ट डूइंग इट विथ माई face. Now I have this contour palette, yes, and I will just give warmness to my face, right? Okay, can you see the difference? Yeah. Now I'm taking this highlighting shade and just applying it on my under eye, my nose, forehead, chin. Yeah. So this is what I have done with my face. Suits me. And now adding some highlighter. Okay, so I am done with my contouring, and this is how I do my contour, which is like suits my face. और मैंने ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कभी कोशिश की नहीं, but you can do whatever you want. Contour से you can change the dimensions of your face. That works so good, and then here is the final look, as you can see. And yeah, this is how I do my contour, and it is looking quite good. For me it works. Somewhere I will चिपका देंगे photos before and after की, so you can differentiate between them. And yes, here is the end of the video. And yes, just if you like this video, just like, share and subscribe my YouTube channel, and please share. And yes, we are just following our 30 days makeup challenge. Just go and watch those videos also, as it is day 12. So इससे पहले 11 वीडियोस मैंने डाल दी हैं, so you can watch it. And yeah, अब मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे कल की भी तैयारी करनी होती है. So yes, keep watching, be happy, just support me and just take care. Yeah, so मन तो नहीं हो रहा जाने का, बस मुझे जाना पड़ेगा. ऐसा लग रहा है बहुत छोटी वीडियो होगी. Okay, so yeah, here is the end of the video, and कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Until then, just keep watching, just like, share and subscribe my YouTube channel, and bye.